Because the entire team यहाँ पे तो एक एक करके अब मैं यहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने इसको पॉसिबल किया है उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा and we'll start with the real Srikanth, ladies and gentlemen, the powerhouse of talent, and he is the most loved self-made superstar. Give it up for Rajkummar Rao. जोरदार तालियां हो जाए. Welcome and congratulations. Thank you so much. सबको गुड़ी पड़वा की बहुत सारी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा एक्टरों की भी. But thank you so much. I think as an actor बहुत मैं तो छटपटाता हूँ मुझे कोई ऐसा दे जहाँ पर बहुत चैलेंजिंग काम करने को मिले, उसके डीप अंदर जाने को मिले. तो थैंक्स टू तुषार कि उन्होंने मुझे सोचा श्रीकांत का कैरेक्टर प्ले करने के लिए. As an actor, that's what I want. That's what I always look for कि जितना चैलेंजिंग, जितना घुस कर काम कर पाए उतना ही ज्यादा मजा आता है. Absolutely, and as a cine lover, every time we get to know कि राजकुमार राव की फिल्म आ रही है, टी सीरीज की फिल्म, एक्साइटेड एक बार जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज. थैंक यू. हमने एक यूनिट देखा था जहां पे वो बीटीएस जैसा है, जहां पे आप श्रीकांत साहब के साथ वो जुगलबंदी चल रही है आप दोनों की. मैं चाहूंगा आप प्लीज डू द ऑनर्स एंड इनवाइट द जेंटलमैन ऑन स्टेज. I love you too, guys. Thank you. Thank you. Srikanth बोला, Srikanth बोला. Give it up for him, ladies and gentlemen. जिन्होंने इंस्पायर किया है इस पूरी कहानी को and of course इस पूरी फिल्म को. The man himself. Srikanth sir, congratulations. Wow, I have no words to say, but I congratulate the entire cast crew, Bhushan Kumarji, Tushar, and one and all who has worked on this film, especially brother Raj, because ever since the motion poster was out, I have been receiving numerous calls and messages from friends and say, both of you look better, and I ask them, who look better? So most of the people tell me, and I take liberty to say, Tushar's father says I look better. I agree. I totally agree. Yeah. But it is a great work put in by the team, especially to show this kind of a story in the most funny and yet inspiring way is a big challenge. And Tushar and team has done a phenomenal job. You see, this is an emotional moment for me because I have to remember late Shri Gulshan Kumarji. And you might be wondering whether I'm gone mad watching a trailer, of course, but I'm not drunk, by the way. Yeah? Because I anyway don't drink. Because it is his pet product, which is T-Series audio cassette, through which I have studied my education, heard those cassettes zillion times, all the way from my class 5 and class 10 and class 12. All the way from class 5 to class 12, I lived and did what you say, what do you do with your wife, Kapram, in Telugu. I lived like a live-in relationship with those audio cassettes, and today those cassettes are the only things among a whole lot of other stuff which got me to the stage. And today, what better has to come? The T-Series production powerhouse has come to make this film. What a connection and what an emotion. And as a person, I don't need more than this. From all the way from a T-Series cassette to T-Series launching my film is a great honor for me for this generation. But a bigger responsibility ahead to protect for the next 35 years because I shot at the age of 30, 35 and living with that glory and achieve more growth for the next 35 years is a big challenge in front of me as a real hero, and I would love to protect that, uphold all your respects, and thank you so much one and all. Hope this film becomes a big success, especially as an actor. This will bring laurels for Raj. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing that. Thank you so much. Truly remarkable is what I'd like to say here. And of course, talking about remarkable, this gentleman, ladies and gentlemen, इनकी एक performance देखने के बाद सब यही कहते हैं, truly remarkable. Give it up for Sharad sahab, ladies and gentlemen.
First things first, before we talk about anything else, that chemistry that we're seeing on that screen, you and Raj bhai, talk to us about that. Like, क्या हो रहा है वो? सर्वात पहिले सर्वांना गुढी पाडवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. हॅपी न्यू ईयर, हैप्पी नवरात्रि. व्हेन तुषार नरेटेड द फिल्म, जब कहानी सुनाई मुझे और जब इनके किस्से सुनाए पहले तो मुझे कहानी से ज़्यादा किस्से बहुत इंपॉर्टेंट थे. जो एक्चुअल रवि जो बैठे हैं वहाँ पर और श्री के साथ जो किस्से थे, वो जो एक केमिस्ट्री सुनाई सिर्फ मुझे, वो इतनी इंटरेस्टिंग है. पहली चीज़, जब भी हम कोई ऐसी फिल्म करते हैं तो बहुत इमोशनल होगी, बहुत बेचारा टाइप फील होगा, बहुत ऐसा सैड स्ट्रक्चर होगा फिल्म का. ऐसा कुछ नहीं था. तुषार बोले ऐसा कुछ नहीं है फिल्म के अंदर. बहुत मज़ेदार फिल्म है, बहुत मज़े करोगे आप लोग. एंड इट्स अ प्लेजर वर्किंग विद राज. हम सब पसंद करते हैं राज को, इसके काम को. और दोस्ती करना आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी फिल्म करने से पहले. सो वी बिकम फ्रेंड्स फर्स्ट एंड देन वी एक्टेड इन द फिल्म. तो कहीं ना कहीं वो एक केमिस्ट्री दिखती है. और जब इतना लिबर्टी देते डायरेक्टर हमको काम करने की कि जो करना है करो, तो हम वही कर रहे थे जो मैं लग रहा था बैठ के. बट थैंक यू तुषार फॉर द फिल्म. थैंक यू भूषण जी. एक और मौका आपके साथ काम करने का लगातार करते ही आ रहे हैं. और टचवुड सारी फिल्में बहुत अच्छी गई हैं अभी तक, और ये फिल्म भी मुझे लगता है लोगों को बहुत पसंद आएगी. थैंक यू सो मच. Thank you so much, sir, for sharing that. And now, ladies and gentlemen, of course, the Kaptan Saab of this ship, जो कि रॉक करने वाला है. एंड इतना ही कहूँगा, इस फिल्म से पहले भी फिल्में डायरेक्ट की हैं, शोज डायरेक्ट किए हैं, एंड बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स जो हैं उनको लिखा है तुषार हीरानंदानी साहब, द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म. क्या कहना चाहेंगे सर? द रिस्पॉन्स, जो हमने यहाँ पे देखा, एंड इट्स अ फुल हाउस. वी आर ऑल सरप्राइज्ड, एवरीबॉडी इज हियर टू सपोर्ट दिस फिल्म. एक्चुअली फुल हाउस से भी ज्यादा है. ये एक्चुअली होना चाहिए हमारे फर्स्ट शो टिल लास्ट शो जब चलते रहे. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. या मैं 4 साल पहले जब मैंने पहली पिक्चर बनाई थी, तो अब मेरे प्रोड्यूसर निधि, जो इस पिक्चर में भी प्रोड्यूसर है, शी कुड नॉट अटेंडेड बिकॉज शी वाज प्रेग्नेंट विद माय सन न्यूज ईयर. और अभी 4 साल बाद नेक्स्ट पिक्चर में ऑलरेडी इधर खड़ा है. तो या इट टुक मी 4 years टू मेक दिस फिल्म. ऑब्वियसली कोविड वाज देयर, बट आई ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम भूषण जी, because it's not a typical kind of film that you make. It's a very risky film. It is people, you need a producer to understand it, and he and Shivji really understood it from day one, and they really supported me and Nidhi while making this film. And obviously when Raj sir came in, and then we just took off from there, and Sharad bhai, everyone just came on, like even Jyotika, Alaya. No one asked me anything. When I should just go and tell them the story of this man, they just instantly took over it and said we'll do the film. So it was great. We really had great fun. Shooting भी बहुत मजे से किया. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. स्पेशली माई टीम, बहुत ही अच्छी टीम थी मेरी. मेरा राइटर्स सुमित, जगदीप, मेरा कैमरामैन प्रथम, बहुत से लोग, मेरा एडिटर संजय, बहुत लोगों ने हेल्प किया. बहुत 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 मजा आया मुझे. तुषार सर, एक थोड़ा सीरियस सवाल ये श्रीकांत के बारे में. उन्होंने बताया, बिकॉज हमने यहाँ देखा बहुत उन्होंने, वो नॉटी भी हैं थोड़े, तो उन्होंने बोला था ये नहीं दिखाना है, ये दिखाना है, ऐसा कुछ बताया था आपको? आपको पता है, मैं इस आदमी के पीछे सबसे पहली पिक्चर मुझे श्रीकांत बनाना था, बट ही डिडंट मीट मी ओनली फॉर 2 years. मैंने बोला मैं एनडीटीवी से इंटरव्यू करना चाहता हूँ, मैं इस चैनल से, बीबीसी से इंटरव्यू करना, मिला ही नहीं. फिर सांड की आग रिलीज हुआ तो उसने बुलाया कि चलो मिल लेता हूँ. फिर वहाँ पे जाकर नहीं उधर पहुँचने के बाद मुझे बोला कि मैंने ये राइट्स ऑलरेडी किसको दे चुका हूँ, मैं हैदराबाद पहुँचने के बाद. फिर उसके बाद बैठा, ही मेड मी श्योर कैसा है ये वो, then he gave me the rights. अभी बोलो. He actually snatched rights from me. I didn't give him. So this man is so perseverant, and more than me actually. He's so resilient enough that he पीछे पड़ा. Then when he ultimately took the rights by force, and I am very lucky to have such a committed couple do this film along with Bhushan ji, because when I met him for the first time, he sounded so happy. Today I'm meeting him again. He is double joyful and happy. So thank you for doing this film, Bhushan sir. Hope this film gives you great success. Thank you so much sir for sharing that. ये बहुत अंदर की बात पता लग गई हम लोगों को यहाँ पे. इसका नाम श्रीकांत भोला है, ये बिल्कुल भोला नहीं.
बिल्कुल. I'm sure, sir. But I'm naughty, of course. See, I knew it, sir. That's why I asked that question. I knew it. मुझे दिख रहा है यहाँ पे. Okay, on that note, ladies and gentlemen, the person who's actually understood what filmmaking is all about, as in क्या क्या जाता है, कैसे कैसे वो creativity उसमें लगाई जाती है, and of course, the moolah, ladies and gentlemen, the biggest and the most loved film producer of our country. Give it up for Mr. Bhushan Kumar, ladies and gentlemen. Sir, ended 2023 on not just a high note, but the highest note. And here we are on this very, very special day, launching something as exceptional as Srikanth. क्या बोलना चाहेंगे and what made you believe in this, sir? First of all, thank you very much for the response you all have given. And मैं अभी बोलते हुए बहुत इमोशनल हो रहा हूँ because जो श्रीकांत ने जो अभी पापा के बारे में बोला, कैसेट्स के बारे में बोला, so I'm very very emotional and touched with your experience, what you have done with the cassettes, which my father was very very attached to. Sir, just to add, those cassettes are the only books that I had in the form of cassettes, and that got me 98% in my first year of maths physics. और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस फिल्म को प्रोड्यूस करने में. जब तुषार मेरे पास पहली बार ये स्क्रिप्ट लेके आया था तो एक लाइन सुनाई थी तो उसी में मैं बहुत हम अटैच हो गए थे. देन वी वर थिंकिंग कास्टिंग किसको करें, तो देन मैं तुषार ने बोला कि ये मेरे हिसाब से राजकुमार राव के अलावा कोई ऐसा परफॉर्मेंस कर नहीं सकता. तो देन वी वेंट टू राज एंड राज ने आई थिंक पहली बार सुनते ही हाँ बोल दिया कि ये मैं फिल्म कर रहा हूँ. एंड थैंक यू राज, आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है. एंड थैंक यू श्रीकांत फॉर गिविंग अस द राइट्स टू प्रोड्यूस दिस फिल्म. It's my noble opportunity and pleasure, sir. एंड शरद, मुझे याद है मैंने आपको एक फ़ोन कॉल की थी कि ये फिल्म आपको करनी चाहिए, आपने इमीडिएटली हाँ बोल दिया था. थैंक यू निधि. शिव, आपने पूरा बहुत मेहनत करके ये फिल्म में बहुत मेहनत करी तुषार के साथ. एंड अबव ऑल यू तुषार, बहुत बहुत शुभकामनाएं. मैं बहुत अटैच हूँ फिल्म से, क्योंकि जितने लोगों को भी मैंने ये अभी ट्रेलर लॉन्च से पहले दिखाया है, सब ने खड़े होकर तालियां मारी हैं. और मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मतलब वी प्रोड्यूस सो मेनी फिल्म्स बट दिस इज़ अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर अस. तो आप सब भी ये फिल्म थिएटर में जाके एक्सपीरियंस कीजिएगा. दिस इज़ माई रिक्वेस्ट. थैंक यू. Thank you so much, sir. 10th May is when we'll get to watch this movie in theaters. And now to invite on stage the very gorgeous Nidhi Parmar, Hiranandani, ladies and gentlemen. We can see the happiness in your eyes. अभी क्या बोलना चाहेंगी? तुषार भाई ने अपनी वो पूरी मेहनत के बारे में बता दिया, and of course इस मेहनत के बारे में भी बताया. Now if you have to sum up this entire journey, what do you have to say? Srikanth, each and everyone here in this audience is like हम already attached हो गए हैं इससे. What do you have to say? I mean, imagine in one promo, if we got attached to him, we spent so much time with him. He's just like a part of a family. And the best part about Srikanth is that I think he's more witty than all of us put together. He has us rolling on the floor whenever we sit with him. And having Raj play Srikanth has been, and I want to tell you all something about Raj. The minute he used to come on set and wear his lenses, he used to transform and he used to become Srikanth. Then koi break bhi hota tha, even if you're eating lunch, he would not remove his lenses. He would sit like Srikanth to the extent that I would not see Raj, I would only see Srikanth, and I would forget sometimes that Raj is playing Srikanth. Till the time he removed his lenses, he was Srikanth. He didn't change he didn't become Raj at any, he was so honest to his performance. It was just it was a pleasure watching him perform. We had a fabulous team. Tushar, I think like Shri, the real Shri, put it very, very eloquently that he's, I don't think there's any person who's more persistent and resilient than Tushar. He gets what he wants, he goes after it. I mean, I married him.
So no, but it's been a beautiful, beautiful journey, and thank you, Bhushan ji. He's really been a backbone for us. He's supported us so beautifully, and I also want to shout out to Jyotika and Alaya, my two girls who are missing today. They are such an important part of this film. They bring the soul and heart of this film, and they are missed today. And but they'll be with us soon, and it's just been incredible. We've met incredible people. It's become a family, and the journey has been long and hard. But we hope everybody enjoys the honesty and the love that we poured into it. Thank you so much, ma'am. Sir wants to add something. You see, except for Raj, every character that is visually impaired are all sitting here. Most of our actors are here. All the actors in the film are visually impaired except for Raj. So whoever are playing visually impaired, they all, in fact, all our stars are sitting here. We had great fun working with them. Thank you everyone over here who has come, Thomas, everyone. Thank you so much. एक बार ये जितने सुपरस्टार्स, जैसा मैंने कहा था, बहुत स्पेशल मेहमान आए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें सब लोग. You know, they deserve each and every word of appreciation, all the love here. एक काम करते हैं, quickly we'll have a photo op with this team, and then we'll have a full photo op in some time. So it's over to you. Go, shoot. Also, we'll invite some very important people on stage. So we'll start with the co-producer. की बात अभी की, of course, talent ने भी की, sir ने भी की, शिव चांदना साहब के लिए जोरदार हो जाए. Mr. Neeraj Kalyan is here, President T Series. Neeraj sir, please आइए. Of course, Dr. APJ अब्दुल कलाम साहब की भूमिका में जमील खान साहब को हमने देखा, उनको भी यहाँ बुलाना चाहेंगे. Also, Mr. Neeraj Roy is here. Neeraj sir, please. जोरदार तालियां sir के लिए. Presenting this entire Kamal ka team of Srikanth, ladies and gentlemen. We'll have a quick photo op. Ravi sir, please. This won't have been possible आपके बिना. Please आइए. Thank you so much. Thank you so much. We'll take your questions now. Thank you, gentlemen. Thank you, Neeraj sir. Thank you. Okay, we'll take your questions now. तो कहाँ से शुरुआत करने वाले हम लोग? आपसे जी. माइक दो भाई. हाय मयूर फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड. मेरा एक सवाल नहीं, मेरी गुजारिश है. उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आई एम वेरी फॉर्चुनेट. सबसे पहले तो श्रीकांत सर, यू आर माई हीरो. आपकी कहानी मैंने जब से पढ़ी थी पिछले 1-2 साल से, यू रियली टच्ड माई हार्ट. और आज आपके द्वारा मुझे एक अच्छा दोस्त मिला है, मेरे बाजू में बैठे हैं मिस्टर चार्ल्स. उनकी कहानी से भी मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ, और मैंने उनको भी कहा था कि एक फिल्म देखने के लिए लोगों को आंखें चाहिए, लेकिन एक अच्छे सिनेमा को समझने के लिए वो दिल से, उसके लिए आंखें नहीं, उसके लिए दिल चाहिए होता है. और आप सभी लोगों में मुझे देखता हूँ, चाहे श्रीकांत जी, राजकुमार, तुषार, आपके अंदर वो दिल है. और क्योंकि ऑब्वियसली इस इशू को मैं थोड़ा बहुत पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है. और जब भारत की बात आती है तो हमारा देश, यहाँ पे एक से एक बड़े डॉक्टर्स है, द बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट करने पुअर है. एंड अ कंट्री लाइक इंडिया हैज़ टू डिपेंड अपॉन एन आइलैंड नेशन लाइक श्रीलंका, जिसकी पॉपुलेशन केवल 2 करोड़ कुछ है. और मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा राजकुमार साहब से, श्रीकांत जी से भी, कि आप अगर एक अपील कर दें इस माध्यम द्वारा लोगों को, कि आप to encourage organ donation, eye donation in this country. Thank you. For sure sir, before you said it, actually हम लोगों ने already हमने बात की है कि हम during our promotion हम इस बात को भरपूर कोशिश करेंगे कि ये बात लोगों तक पहुँचे कि organ donation कितना important है
जैसे कि आपने कहा, आपने पर्सनली इस चीज़ को महसूस किया है। आई एम श्योर देयर आर मिलियंस आउट देयर जिन्होंने महसूस किया है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए। Yeah, I echo what Raj said, sir. Hi, this is Nawaz Kochra from Indian Express. I have two questions. One is for Raj, you, and one is for Bhushan, sir. Sir, Bhushan, sir, I'll start with you. I want to know that, 2023 you gave us the biggest blockbuster with Animal. And now comes Srikanth, which is, a full of life story, so inspiring. I want to know what is it that pushes you every time to, bag stories which are so diverse, yet so, in the heart is in the right place. First of all, you like the trailer? Absolutely. See, we are a studio, means definitely as a studio, we want to, give our audience different kind of cinemas. And as I just told you, when I just told about the film, कि ये फिल्म हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जब जिस टाइप की इमोशनल स्टोरीज लोगों को एक्सपीरियंस करनी चाहिए, तो उसके लिए इसलिए हम हर टाइप की फिल्म, कॉमेडी भी बनाते हैं, हम एनिमल हमने भी फिल्म बनाई, एंड वी मेड तानाजी ऑल्सो, वी आर मेकिंग भूल भुलैया, वी आर मेकिंग रेड, वी आर मेकिंग सो मेनी फिल्म्स, बट आई थिंक दिस काइंड ऑफ सिनेमा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो लोगों को एक्सपीरियंस कराने के लिए उनको इसके, आप अगर एक ब्लाइंड मैन की कहानी भी बता रहे हैं, तो आप उसको किस तरीके से इंटरटेनिंग बना सकते हैं, और प्लस उनकी लाइफ में क्या क्या होता है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो एज स्ट्रॉन्ग एज पीपल हु हैव आइज, तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से करना चाहिए, एंड हम एज टी सीरीज वी वॉन्ट टू डू दिस काइंड ऑफ more and more films in future. Thank you so much. Raj, I have a question for you, Raj. So, 14th year in the industry for you, if I'm not wrong. And what I've seen is that Rajkummar Rao has never succumbed to the pressure of, being a celebrity when visibility is concerned, but he's rather, made his craft speak for himself. And with Srikanth also that is happening. I want to know that, the Raj who started off in 2010, what was his idea of entertaining the audience? And today, what is the reason that, Raj picks up roles that are so performance heavy? I think the idea was same when I started out in 2010 with the Love, Sex or Dhoka with Divakar Banerjee. The idea was same, that to just push myself as an actor and to do variety of roles, and not to put myself into a bracket. This is something that people should know me for. कि राज सिर्फ यही करता है. I want to do everything. I don't want to never ever think कि ये शायद नहीं हो पाएगा. Whenever somebody says कि यार ये बहुत मुश्किल है, तू कर पाएगा, as Srikanth says in the film also, कि मैं सब कर सकता हूँ. मैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं कर सकता, मैं सब कर सकता हूँ. And that's what I want to aim for. That's what I want to try. To push myself as an actor with every film whenever you get an opportunity. Of course, you do films which are like light-hearted, like Stree and Bareilly also. But whenever I get a chance to do films like Srikanth or Shahid or Trap, Newton, I love it. As an actor, drama will always be my favorite genre. But I love making people entertain as well. Giving them entertainment. Either entertain them or engage them in a conversation. So that's the two ways I see cinema as. Hi Rajkumar, Ravi from ABP News. Raj, मेरा सवाल ये था कि सिनेमा में पहले भी कई लीड एक्टर्स ने इस तरह के ब्लाइंड शख्स के किरदार निभाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन फिल्मों में ब्लाइंडनेस को, जो नेत्रहीनता है, उसको प्रॉप की तरह किया जाता है, या जो रियलिटी है उससे वो दूर होता है, वो किरदार फिक्शनल होता है. चूंकि ये किरदार रियल लाइफ शख्स पे बेस्ड था, तो आपने किस तरह की तैयारी की और किस तरह का प्रिकॉशन लिया कि ये ऊपरी तौर पे ऐसा ना लगे कि एक शख्स जो देख सकता है वो ब्लाइंड शख्स का किरदार निभा रहा है, और उसको जो रियलिटी का टच दिया जाता है, वो कैसे आपने उसको मैनेज किया जब आप ये किरदार निभा रहे थे? सर, यही मेरा प्रयास है, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि वो ऐसा लगे कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ. उसके लिए मैंने श्रीकांत के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, और जो मैंने तुषार को भी फर्स्ट डे ये हमने जब बात करना शुरू की, तो मैंने बोला था कि दिस फिल्म इज नॉट अबाउट श्रीकांत विजुअली इम्पेयर्ड. दैट्स
that's something that is there. It's a story. We are seeing an aspirational story. वो visually impaired है, ये एक fact है. But we're not going to focus on him being visually impaired. Because when I met Srikanth, we were very normal. Like, you know, we were like talking, discussing. He's very witty, he's very funny. I asked him so many questions. Some of them were very personal as well. But he was very और उनको कितना observe करूँ, कितना अपनी जिंदगी में उतारूँ. And apart from Srikanth, मैं और तुषार बहुत सारे visually impaired school भी जाते थे. हम लोग यहाँ पे गोरेगांव एसपी रोड पे जोगेश्वरी में वहाँ पे ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ जाते थे. वहाँ पे घंटों में बैठता था. Because my thing was I wanted to portray reality on screen. कि मैं जैसे कि दीदी ने कहा कि कोशिश यही थी कि मैं जब सेट पर आऊँ तो मैं श्रीकांत हूँ, जब तक पैकअप ना हो मैं श्रीकांत ही रहूँ. वो हम एक लेंस पहनते थे आँख में छोटा सा कुछ, जैसे ही वो लगता था मैं श्रीकांत हो जाता था. फिर सेट पे कोई आता था नहीं आता था मुझे पता नहीं होता था. एक बार भूषण जी भी आए थे. But I think that's the only way I could do this part. Otherwise, you know, just to act like a visually impaired person on camera and then cut and then you're normal Raj hanging out chilling. That's not how I see, you know, my art is. My art is too spiritual. It's too meditative for me, and I love it immensely. Just to you know, corrupt it with any kind of cheat codes. Actually, I have to tell you something. One second, I'll tell you. One second. Just to add something. तो जो पहला दिन जब शरद और ज्योतिका ने शूट किया इसके पूना में, तो ये बिल्कुल उनसे बात नहीं किया. तो शरद और ज्योतिका दोनों मेरे पास आए, बोला ये बहुत ही अकड़ता है यार, ये एक्टर है क्या है, बात भी नहीं करता. तो ऐसे नहीं ये ऐसा ही है, रोल क्लियर. देन इन द इवनिंग व्हेन दे मेट देम, दे सेड हाँ ये ठीक है. तुषार, आपसे भी एक सवाल था कि just to finish up the previous question, because this is little important I feel. So in this movie, the blindness is not shown, the vision is shown. See, many people often ask me, do you have any vision? Of course I tell them I am full of vision. What do you mean? No, you don't see, no. So people doesn't mean vision is different and sight is different. People doesn't often get that difference. And I made it very clear to Tushar, and Tushar actually understood that concept, that vision is for the mind and sight is for the eye. So the eye is not shown, whereas the mind is shown in this film. Therefore the netrahinta or whatever blindness, which is so-called sympathetic angle that people take it, that is not shown. A man with challenging nature, without the privilege of eyesight, but with full of vision can do wonders. That is the concept. श्रीकांत, आपसे भी एक सवाल था. जैसे कि आपने कहा मजाक में कि जबरदस्ती राइट्स ले लिए तुषार ने मुझसे मेरी फिल्म के. कोई ऐसा जब आपको पता चला कि फिल्म बनाना चाह रहे हैं तुषार, तो कोई ऐसा प्रेफरेंस था कि भाई कौन मेरा किरदार निभाए? आपके मन में कुछ चल रहा था? आपसे यह सलाह ली गई थी इस बारे में कि कुछ इसका बस चले खुद ही कर लेता. I told him I'll play my role. But he was very afraid nobody would see in the theater, so he had hired a right actor, right cast. But Tushar was so passionate, Nidhi was so passionate, so determined that no, I don't need to even give them any ideas, because they themselves come up with ideas and tell, how is this looking like? I would have no words, because they have gone all out to make this film a big success. So they put in their heart and soul into it. So when you actually put heart and soul and work hard, there's nothing under the sun that you cannot reach or achieve. This is what is happening. राजकुमार जी, तकरीबन कितने लोगों को बेचकर खाने की तैयारी कर रहे हैं? पहले तो तुषार को तो करना पड़ेगा. राजकुमार, नहीं, मैं बेच के खाने की तैयारी नहीं कर रहा हूँ किसी को भी. मैं बस खाने की तैयारी कर रहा हूँ. No. If the person is so violent that selling them is not an option, we can even do it. ऐसी कोई लिस्ट बनाते हैं आप? लाइक अब तो आप एक्टर बन गए, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम आपको लोगों ने बहुत परेशान किया था. नाउ अब आपने ऐसी तैयारी की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. मैं बिल्कुल भी विंडिक्टिव नहीं हूँ. और अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान करता है, हाँ, तब जरूर क्यों नहीं तब मैं श्रीकांत बन जाता हूँ. जैसा इसका ग्रिट है, जैसा इसका परसिवरेंस है. बट अदरवाइज नो, आई एम नॉट विंडिक्टिव एट ऑल. आई थिंक वी ऑल शुड बी good human beings first, यार. उसके बाद ही I think सब कुछ, everything else matters later. I have a question for Srikanth and Rajkummar. Srikanth, I think in a very light note, it's your academic achievements are obviously known, but you're someone who understands
sound so much better than the rest of the world. I want to understand, how did you look at Hindi cinema when you were listening to cassettes at the time and visualize? Today you're literally being on screen and you're being celebrated in the biggest industry. So tell us about that. Who were your actors and the songs that you like at that time? The next question will be for Raj. See, you can see until your eye can see, but I can see beyond. That is what makes the Fantastic. difference. Because that is what actually, what makes us pay attention to minute things that are so important in life. Because if you don't have a privilege of eyesight, you have to pay extra attention in whether doing business, that too under very complicated environment in our country, or whether it's education, whether it's playing cricket. See, the ball, when it rolls on the ground, when the wind is so high, the ball sound is not even heard, is not even properly audible. Yet you need to pay attention on your ears to make sure how the ball is coming, be it a baseball or be it a cricket ball that I played. So it's always important to pay attention to detailing in life, whether for a normal individual or visually challenged individual. So things, because it's always challenge to pay detailing on multiple on small things. So that's exactly what I do, and that is what gives me good results. So I can even tell whether my machine bearing or a blade is right by hearing the noise of the machine. So that is the level of detailing that I give it to in the works that I do. So coming to movies, yes, I watch selective Hindi movies which carries big subject, which carries. So I have seen biopics like Gunjan Saxena. I have seen Parmanu and things like that. Some movies which has a good subject again. So I'm very particular in terms of watching movies. Telugu, I watch a lot of movies because movie and language goes together with me. I cannot resonate even though I speak flawless English, I don't watch English movies because that is not where I belong. The medium that I belong is Telugu, and that is where I take entertainment and I watch most movies. Fantastic. Thank you, sir. Raj, and of course, Tushar, I think, one thing I obviously, before I ask the question to Raj, Tushar has a knack for